Assalamu alaikum, everyone. So the purpose of this video is that we are going to quickly go over all the concepts that you need to know about for your A-level maths paper 1, so that you do not end up missing out on something important. I'm just going to list down the topics without any explanation. If you want a brief explanation of any particular concept, what you can do is you can have a look at the description. I've posted a playlist there. जिसके अंदर सारी आपके पास quick revision videos available हैं for every one of these topics. These notes are from those videos. तो आपको किसी भी चीज को जाके थोड़ा सा briefly understand करना है. You can have a look at that part of that video, and that should be helpful, inshallah. All right. So, and I'm going to keep it short, because I'm just going to list down the topics that you need to know about. So let's begin. First of all, we've got quadratics. Quadratics, we need to know about factorization. Factorization से कैसे equation solve कर सकते हैं. You need to know a quadratic formula. Now, just a piece of advice here: make sure that you are showing complete working in your exam. अगर आप working show नहीं करोगे, you will lose marks on this. आपको at least quadratic formula के अंदर values input करके दिखानी होती हैं, और factorization में at least factors show करने होते हैं. Otherwise, आपको answer के marks में नहीं मिलते. ठीक है? Make sure that you show that working. You need to know about shape of quadratic curves, U shape, N shape, minimum point कब होता है, maximum point कब होता है, ये दोनों shapes कब आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए. Gradient positive किस side पर होता है, negative किस side पर होता है, increasing decreasing function उसकी वजह से कैसे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए. Turning points कैसे find करते हैं? You can find turning points using completing square. You can find turning points using this method, x equals minus b over 2a. ये दोनों methods आपको आने चाहिए. Completing square process आपको पता होना चाहिए. Then sometimes you have forms that are not standard forms of standard completed square forms. यहाँ पे x का coefficient आ रहा होता है. You need to know how to convert your completed square form to something like that. ये आपको पता होना चाहिए. Then you need to be able to solve simultaneous equations. You could have one linear, one quadratic. You should be able to solve these equations. Then you have nature of roots. When you have two roots, two distinct roots, two distinct real roots, two equal real roots, or no real roots. In तीनों में आपका क्या होता है? Discriminant greater than 0, equal to 0, less than 0. And then similarly, there's another possibility that you'll find a lot in recent papers. It's tested a few times. You'll find that in recent papers. उसमें से भी एक होता है, there are real roots only. और आप उसमें आपके पास दोनों possibilities होते हैं, greater than or equal to. You need to know about that. It's the statement that they sometimes use for that is the line and the curve meet, without specifying whether they're meeting at 1 point or 2 points. You need to know about that concept. And then you have then you sometimes have to show whether show that a curve lies above the x-axis or below the x-axis. ये आपको show करना आना चाहिए. Or sometimes to say if an expression like this is always positive or always negative, or ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है? ये दोनों methods आपको पता होने चाहिए, below the x-axis or above the x-axis वाला, और positive negative वाला. Quadratic inequalities कैसे solve करते हैं? ये आपको आना चाहिए. Then you have some equations in which you have a form that can be converted to quadratic. It's powers की ratio 2:1 होती है. How you can convert that to quadratic using substitution. In the recent papers, again, you'll find a few questions in which they ask you to show something like this, that show for all values of a particular constant or a particular unknown, okay, the line always intersects the curve or always does not intersect the curve. उसमें आपको show कर आप ये start इससे नहीं करते, b²-4ac greater than 0, less than 0 से आप assume नहीं करते, पहले आपको ये show करना होता है. There's a whole method for that you need to know about. Okay, ये आपको आना चाहिए. So that's about it in quadratics. When you have binomial expansion में you need to be able to expand expressions using the binomial formula, simple expansion. Then you can sometimes compare a form that's already given in the question. उसने आपको कोई form दी होगी, और आप अपनी expansion से कोई form find करोगे, equate both of them or compare both of them to find any unknowns that you have here. You may have to use substitution sometimes, where you will have one particular form in one part of the question, another form in the other part of the question, जिसमें आप compare कर सकते हो कि दोनों में क्या चीज change हो रही है, और उसको सिर्फ उससे replace कर देते हो. Sometimes you have to use substitution like this here. You should be able to find a coefficient of a particular term in an expansion. For example, x का coefficient find करना है, या a term independent of x constant
find karna hai in simple expansions like these. Sometimes then you can have a product as well, two expressions being multiplied. एक simple expression है, एक binomial expansion वाली expression है, वो दोनों multiply होंगे, उससे आपको एक particular coefficient find करना है. That's another thing that you need to be able to do. That's binomial. These are the concepts that you need to know about binomial. When you have AP and GP, you need to know how an AP is defined, first term and the common difference. Difference कैसे find करते हैं, next minus previous. इसका term formula क्या होता है, इसके sum formula क्या होता है. AP के दो formulas होते हैं. You need to know when to use which one. You've got this formula on the left side and this formula on the right side. Last term वाले दोनों formulas given होते हैं formula sheet के अंदर. You've got a GP after that. GP में आप किस तरह define कैसे करते हो, first term and the ratio. How do you find the ratio, next term divided with previous term. You've got formulas for a GP, term formula, इसको कैसे use करना है. And you have the sum formula for a GP. And you have sum to infinity of a GP. How do you figure that out? Sum to infinity के अंदर फिर आपकी condition होती है कि जो आपकी जो ratio है, ratio has to be between -1 and 1. Sometimes they ask ratio आपकी series converge करती है नहीं करती, इसमें आपको ये concept use करना होता है. Sometimes they give you a formula themselves, and then you have to figure out the first term perhaps, or in case of an AP आपको difference find करना हो सकता है. In case of a GP आपको ratio find करनी हो सकती है. उन्होंने एक formula दिया होगा, आप अपना एक formula निकालोगे, दोनों को compare करोगे, and you can find unknowns from that. This is an important type that you need to know about. And then sometimes they have scenario-based questions, and that there's one thing in particular that you should know about, कि percentage increase or percentage decrease जब भी होती है, that's always a GP. और उससे आप उसको किस तरह से ratio में convert करते हो, और फिर आप GP formulas कैसे use कर सकते हो. Sometimes they have two different sequences given, उनमें कुछ terms दूसरे के कुछ terms के equal होती हैं, उनको equate करके आपने equations बनानी होती हैं, उनको simultaneously solve करते हैं. That's another idea that you sometimes have to use. That's AP, GP. Coordinate geometry के अंदर you need to know the distance formula, midpoint, gradient, positive gradient कब होता है, negative gradient कब होता है, gradient 0 कब होता है, horizontal lines का undefined होता है, vertical lines का. In parallel lines, the gradients are equal. In perpendicular lines, the gradients are negative reciprocals of each other. You need to know about all of these concepts from O levels. And then how do you find equation of a straight line? Y equals mx plus c, and y minus y1 equals m into x minus x. When ये दो forms आपको पता होनी चाहिए. Simultaneous equation कैसे solve करते हैं? Again, it's very important here that you show the working for this. आपने direct calculate से नहीं करना, उसका आपको marks नहीं मिलेंगे. You have to show the working for this, substitution, elimination, जो भी आप method use कर रहे हो, show working for that. You need to be able to do that. Points of intersection होते हैं आपके किसी भी graph के, वो आप simultaneously equation को solve करके उस तरह से find कर सकते हो. If you have an equation given, how you can find the gradient of a straight line from that equation. Straight line की equation दी, उससे gradient कैसे find कर सकते हैं. And then you need to know about some properties of diagonals of these common shapes. These two are very important because they're very commonly tested. Squared or rhombus के जो diagonals होते हैं, they are perpendicular to each other and also perpendicular bisectors of each other. They meet at midpoints. बाकी properties भी आपको पता होनी चाहिए. Equation of perpendicular bisector कैसे find करते हैं, ये process आपको आना चाहिए. Then you can then how do you find areas of shapes for which you've got some coordinates given, उसने आपको coordinates बताए होंगे, उसके vertices के, आप उससे area कैसे find कर सकते हो shape का. You can use a graphical method, or you can use this formula if you want. How do you find area between a line and the x-axis? You've got this formula for this, tan theta equals gradient. How do you find angles between two lines? You can again use that same idea. There's a whole concept आप इसको किस तरह से use करोगे, or you can just memorize this formula that you've got here. Tan theta equals this thing that can give you an angle between two lines. That's another thing that you need to know about in coordinate geometry. Next, we've got equation of circle. Equation of circle में this is the standard form. Standard form से आप किस तरह से आपको रेडियस अगर गिवन है और सेंटर गिवन है, आप किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन फाइंड कर सकते हो. अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है, उससे आप किस तरह से रेडियस और सेंटर फाइंड कर सकते हो. अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है एक्सपैंडेड फॉर्म, आप उसमें किस तरह से स्क्वायर कंप्लीट करके रेडियस और सेंटर फाइंड कर सकते हो. सर्कल थ्योरम्स आपको कुछ आने चाहिए. This one in which the center of a chord, when it's joined with the center of the circle, it makes a 90 degrees. ये property आनी चाहिए. Angle in a semicircle, radius and tangent are perpendicular, and
tangents coming from a single point outside the circle, ये चार properties आपको definitely आनी चाहिए. Chords के midpoints हमेशा जो है वो chords के जो perpendicular कोई भी chord होती है आपके circle के अंदर, उसका perpendicular bisector हमेशा center से pass करता है circle के. You need to know about that property because that's going to be helpful when you have some points given on the circumference of a circle, और उनको use करके आपने circle की equation find करनी होती है. There's a whole process for that. You need to know that process. An equation of circle कैसे prove करते हैं कि कोई point circle के बाहर है या उससे अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए. कैसे prove करते हैं कि कोई line जो है वो circle का tangent है. That's another thing that you need to know about. These are some concepts that you need to know about in equation of circle. When you have circular mirror, you need to be able to convert degrees to radians and radians to degrees. The conversion आपको पता होनी चाहिए. Arc length का formula S equals R theta. Area of a sector, perimeter of a sector, ये आपको पता होना चाहिए. Area of a sector is given by this. Area of triangle के दो formulas, half into base into height, half into AB sin C. You need to know them. Area of segment कैसे find करते हैं? Sector में से triangle minus कर देते हैं. Perimeter क्या होता है किसी भी shape का? It's just length of the whole boundary के lengths को सबको add कर देते हैं. Again, circle theorems यहाँ पे भी आपके पास अक्सर use हो रहे होते हैं. And then the other is just so the other is just things that you learn with practice. किस तरह से shapes को break करना होता है. To find areas and perimeters. Trigonometry, P1 trigonometry के अंदर आपको sin, cos, tan ratios ये किस तरह से defined होती हैं using right angle triangle, but then you need to know what their values are for some specific angles, 0, 30, 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees. In pen की exact values आपको use करनी होती हैं. You can find them from a calculator, so that's perfectly okay. But you always have to show the process. आपको in the sense के आपको value input करके दिखानी होती है. बेशक आप calculator से find करो, लेकिन आपने value input करके वहाँ पर show करनी है. उसके बाद उसको simplify करना है. Exact form में आपको answers use करने values use करनी पड़ती हैं. You have to make sure that you use exact form. वो आपने show करना है. Angles anti-clockwise positive करते हैं, clockwise करते हैं तो वो negative होते हैं. ASTC, ये ASTC हर quadrant के अंदर कौन सी ratios, कौन से trigonometric functions positive होते हैं, कौन से negative होते हैं. Basic angle क्या होता है? Basic angle और quadrants को use करके आप इस तरह से equation solve करते हैं. Sin और cos -1 और 1 के दरम्यान में होते हैं. Tan की कोई range नहीं होती उस तरह से. फिर आपके पास यहाँ पे भी अक्सर वो quadratic form आ जाती है, where you can convert an equation to a quadratic form, 2:1 में powers हो, उसको solve करके आप किस तरह से end पे results निकाल सकते हो by treating those answers individually. Sometimes at the end you end up getting something like this. Let's say sin square theta equals 0.5 आ रहा है आपके पास. When you take square root in this case, remember always to use plus minus. यहाँ पे आपने नहीं बोलना कि plus minus use करेंगे. That means you can be in any of the 4 quadrants because plus भी हो सकता है, sin negative भी हो सकता है. That's another thing that you need to know about. Then you've got identities. Sin square theta plus cos square theta equals 1. Tan theta equals sin theta over cos theta. In identities we use करके how you can prove other identities. Again, practice बहुत important होती है इसके लिए. Remember, you can't take terms from one side to another when you're proving identities. Keep that in mind. How can you solve equations like these जहाँ पे function के अंदर, trigonometric function के अंदर x है theta के बजाय कोई linear form आ गई है. Linear के बजाय कुछ और भी हो सकता है, but generally it's linear. 2x plus 15. How do you solve equations like these? किस तरह से आपको range adjust करनी पड़ती है, उसके बाद उसको solve करना पड़ता है. The same thing could work in radians as well. Then sometimes you have some particular ratio given. For example, sin theta उसने बता दिया. How can you find cos theta, tan theta, or theta के बजाय कुछ और उसने अंदर दे दिया, उसको कैसे figure out करेंगे using right angle triangles and quadrants. ये इनके methods आपको पता होने चाहिए. You need to be able to sketch trigonometric graphs, simple graphs, sin, cos, tan के, and then their transformations. अगर horizontal transformation हो रही है, vertical transformation हो रही है, vertical के अंदर आपका amplitude कैसे change हो जाता है, baseline कैसे change हो जाती है, horizontal के अंदर how does your period change, how does the graph shift left or right. You need to know about that. ये transformations का आपको idea होना चाहिए. Sketching के लिए आप calculator से values में input करके देख सकते हो, as long as you know a general shape of the graph. Then you've got functions after that. Functions में you need to know basic function notation. You know that from O levels already. 1-to-1 functions क्या होते हैं, इनका आपको idea होना चाहिए. Horizontal line test. How do you figure out from a graph कि वो 1-to-1 function है नहीं है? You need to be able to figure that out. Domain और range क्या होती हैं? Values of x are domain, values of y are range. फिर आप
किसी भी फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड करते हैं, जो आसान वाले फंक्शन होते हैं क्वाड्रेटिक लीनियर वगैरह, उनके आप स्केच करके देख सकते हो। बट इन जनरल आपने हमेशा एंड पॉइंट्स तो देखने होते हैं, और फिर उसके अलावा आपने डोमेन के एंड पॉइंट्स आपने हमेशा देखने होते हैं, और इसके अलावा आपको कुछ और पॉइंट्स फाइंड करने हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इट इज। लीनियर फंक्शन में कैसे रेंज फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक में कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन जहाँ पे एक्स डिनोमिनेटर में आ जाए उसमें कैसे रेंज फाइंड करते हैं, यू नीड टू नो अबाउट दैट। देन साइन और कॉज वाले फंक्शंस आ जाएं, उनकी रेंज कैसे फाइंड करते हैं, दैट्स अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट। इन सब के प्रोसेस आपको आने चाहिए, इनकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाउ डू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, लीनियर फंक्शन आपको ओ लेवल से आते हैं, बट हाउ डू फाइंड इनवर्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो सारा प्रोसेस आपको आना चाहिए। बट रिमेंबर इनवर्स ओनली एग्जिस्ट फॉर वन टू वन फंक्शंस, और इसमें क्या होता है, डोमेन और रेंज किस तरह से आपकी फंक्शन की डोमेन आपकी किस तरह से इनवर्स की रेंज बन जाती है, और फंक्शन की रेंज आपकी किस तरह से इनवर्स की डोमेन बन जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। How can you sketch graphs of inverse functions? आपको हमेशा सेम स्केल लेना होता है, x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर, वो दोनों आपने रिफ्लेक्शन शो करने होते हैं y इक्वल्स x लाइन के अंदर, वो आपको याद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फंक्शंस का इनवर्स कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करके करना होता है हमेशा, और एंड पे आपको डिसाइड करना होता है कि प्लस माइनस में से आप कौन सा लगाएंगे। हमेशा एक यूज करेंगे, कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, यू नीड टू नो द प्रोसेस ऑफ हाउ टू फिगर दैट आउट, कब प्लस लगाएंगे कब माइनस करेंगे, उसकी डोमेन रेंज वगैरह कैसे लगते हैं, यू नीड टू नो अबाउट दैट। कॉम्पोजिट फंक्शंस, composite function find कैसे करते हैं, that's the easier part, but then you need to know how to find the domain of a composite function or the range of a composite function। इसमें जो relationship होते हैं कि जो inner function की domain होती है वो आपकी composite function की भी domain होती है, और जो inner function की range होती है वो outer function की domain होनी चाहिए, right? So that's the concept that you need to know about in composite functions. It tends to be a bit complex, a bit complicated, so you need to make sure that you have enough practice in this. Next, we've got function transformations. Transformation across three types of transformations: and translation, reflection, stretch, vertical or horizontal. So there are total 6 transformations. Vertical transformations क्या होती हैं, horizontal क्या होती हैं, इन तीनों में आप क्या क्या करते हो, उनको describe कैसे करते हो, ये पता होना चाहिए। Vertical transformations में आपकी कुछ ना कुछ हो रहा होता है फंक्शन के बाहर, और सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। Horizontal, this is the summary of those transformations. ये सब कुछ हो सकता है in vertical transformations. And then you have horizontal transformation, something happens inside the function, x की जगह पे कुछ और आ जाता है, this is the summary for that. इसमें क्या करते हैं, फिर आप combine जब करते हैं transformations, तब क्या होता है, if you combine vertical and horizontal transformations, what happens to the order in that case? Order of transformations उसमें matter नहीं करता, but in multiple vertical transformations and in multiple horizontal transformations, the order does matter. वो किस तरह से आपने डिसाइड करना है, वर्टिकल में क्या ऑर्डर होता है, हॉरिजॉन्टल मल्टीपल आ जाए तो उसमें क्या ऑर्डर होता है, यू नीड टू नो अबाउट दिस ऑर्डर, ये आपको पता होना चाहिए। Then you have differentiation after that. P1 differentiation, इसमें chords का sequence को use करके आप किस तरह से gradient estimate करते हो, ये process आपको आना चाहिए. It's only tested a couple of times, but you have to know this process. Power rule of differentiation, the general power rule जहाँ पे अंदर power के अंदर x की जगह पे कुछ और आ जाए, how to differentiate functions like these. Equation of tangent and normal कैसे find करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे प्रूव करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या उसने दिया हो तो उसको यूज करके आप किस तरह से कोई अननोन्स फाइंड कर सकते हो, ये प्रोसेस आना चाहिए। स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, उनकी नेचर कैसे फाइंड करते हैं, विद द मैक्सिमम और मिनिमम यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड द सेकंड डेरिवेटिव, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज और चेन रूल, रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चंस और उसमें चेन रूल कैसे यूज करते हैं। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आते हैं इसमें अक्सर फर्स्ट पार्ट के अंदर, यू हैव टू नो द प्रोसेस फॉर मेंसुरेशन, यू हैव टू नो द फॉर्मूलाज फॉर देम, कुछ कॉमन फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। कोन, पिरामिड और स्फीयर के आपको फॉर्मूला शीट में दिए होते हैं, बट द अदर्स यू हैव टू नो for the first part of questions like that. Integration में आपको पता होना चाहिए, it's the reverse differentiation. Power rule इसमें भी आपको पता होना चाहिए किस तरह से आप integrate करते हो simple function like these. But then if you've got something other than x inside the power, उसको कैसे integrate करते हैं, अगर कोई constant आ जाए आपके पास जो multiply हो रहा हो, you need to know कि उसको आप बाहर लिख सकते हो integration के, that's just optional. You can do that if you want. Then if you have something in fraction like this, आप denominator को किस तरह से ऊपर लेकर आ सकते हो और फिर integrate कर सकते हो using the power rule.
you have to remember जो ये power rule होता है इसके अंदर जो expression होती है it has to be linear. If it's not linear you can't use this rule. अगर वो linear नहीं है आपको क्या करना पड़ता है उसको expand करना पड़ता है फिर आप integrate कर सकते हो उसको. You need to be able to find equation of a curve from its derivative given है उसे curve की equation कैसे find कर सकते हैं. constant c की value find करनी होती है using the point that's given. Definite integrals कैसे evaluate करते हैं जब बेसिकली हम लिमिट्स होती हैं उसको definite integral कहते हैं. इस तरह से upper limit input करते हैं उसमें माइनस कर देते हो lower limit. And then you have to know these area and volume formulas. ये formula sheet में नहीं दिए होते. You have to remember them. Area of curve between area of the region between curve and x-axis, curve and y-axis. Volume of revolution about x-axis, volume of revolution about y-axis. ये आपको पता होने चाहिए. इनमें प्लस माइनस कब होता है ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही होती है नीचे वाली नेगेटिव आ रही होती है. In case of area between a graph and x-axis, we've got similar rules for the others as well. How do you find areas between two curves? upper वाले में से lower वाला minus कर देना होता है. Similarly, you've got volume of revolution वाले formulas. Volume of revolution में भी अगर आपके पास दो ग्राफ्स के दरमियान रीजन है तो उसमें आप किस तरह से उनमें फाइंड कर सकते हो volume of revolution by subtracting the volume of revolution of the upper curve from by doing the subtraction volume of revolution of the upper curve minus the volume of revolution of the lower curve. उसमें भी आप उसी तरह से वही concept use कर सकते हो. But you have to remember जब भी उसने x axis के about revolution का कहा हुआ है आपको वही formula use करना होता है. Volume के अंदर आप formulas interchange नहीं कर सकते हो. एरिया के अंदर यू हैव अ चॉइस. कभी कभी आप दोनों तरीके से कर सकते होते हो बस वॉल्यूम के अंदर फॉर्मूलाज नहीं चेंज कर सकते. इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स क्या होते हैं जब आपको इन्फिनिटी आ जाती है लिमिट्स के अंदर या फिर कोई ऐसी लिमिट आ जाती है जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में जीरो आ जाते हैं. उनको कैसे एवेल्युएट करते हैं. यू हैव टू नो अबाउट दैट कि किस तरह से जब इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ जाएगी वो जीरो बन जाए करेगी. फ्रैक्शन जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए करेगा that basically goes towards infinity. So these are all the concepts that you need to know about in paper one. That's going to be tomorrow. I wish you all the best for your exam. If there's anything in particular here that you think you haven't covered, make sure that you do that, because all of these are concepts that have been repeatedly tested in the past papers. You've got the quick revision videos uploaded and uploaded on YouTube on my channel. आपके पास link दिया हुआ है. If there's anything, any concept that you want to briefly review, you can do that from there. And that's just a final piece of advice from tomorrow. If there's one advice that I can give you that you should definitely make sure that you follow, that is, do not get stuck at any one question. कोई question नहीं समझ आ रहा, you spend a few minutes in that, move on. उस पे आपने स्ट्रेस नहीं करना. मूव ऑन एंड कम बैक टू दैट क्वेश्चन लेटर ऑन. दिस इज वन थिंग जिसकी वजह से बहुत सारे पेपर्स खराब होते हैं. एक क्वेश्चन पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रही, मेक श्योर दैट यू डू नॉट एंड अप गेटिंग स्टक. Move on and come back to that question later on. Okay, and sleep well. You sleep well. Okay. All right. So that's it from my side. Okay. So I hope this was helpful. I'll see you again in another video. Allah Hafiz.